Yes. And we were supposed to discuss this last one, that is the wave function for a linear harmonic oscillator for n value 20, and some final conclusions which can be drawn. One or two conclusions that we already observed was that the classical result and the quantum result were not in exact agreement, whereas the classical theory suggested that the particle is likely to be found near the extremes. The quantum theory mentioned that the particle, quantum theory, the prediction for the probability depends upon the values of n, but not exactly what classical theory suggested. The other observation that we registered was, like, there was a fair probability of finding the particle even beyond the classical limit, and so on. Now, this is for n equals to what value? 0. 0. This is for n equal to 1, for n equals to 2, and the last one is for n equals to 3. Let us generalize the things so that we can directly have the plot for n equals to 20. What could be the plot for n equals to 20? So for n equals to 0, the probability of finding the particle at the mean position is Maximum. Maximum. But for n equal to 1, the probability of finding the particle at the mean position is 0. But again for n equals to 1, n equals to 2, the probability for finding the particle at the mean position is not 0. Even though not maximum, but not 0. So we can generalize it for some odd and even values, that whenever n is odd, the probability of finding the particle at the mean position is 0. But whenever is n even, the probability of finding the particle at the mean position is non-zero. Now, we are familiar with these terms, is it that the probability of finding the particle at this location is 0? Yes, sir. So with a very familiar terminology that we know from the earlier time, we call these locations as nodes, where the probability is 0, and the locations where the probability of finding the particle is maximum, we call these points as anticipated antinodes. So nodes and antinodes you have depending upon the probability. So these are the nodal points. Here we have an antinode, here we have an antinode, and also here we have an antinode. This is for n equals to 2. Now for n equals to 2, how many nodes are there? 2. 2. What about the antinodes? 3. 3. 1 greater. If you come to n equals to 3, how many nodes are there? 3. 3. Antinodes? 4. 4. So whatever is the value of n, so many number of nodes are there, and one more is the number of antinode, and the probability of finding the particle at the mean position flips between 0 and non-zero.
depending upon the values of n, whether it is even or odd. So whenever n is even, the probability of finding the particle at the mean position is non-zero. Also, you can observe from the plot that as you move away from the mean position, the amplitude of the probability is increasing. These heights are not same, it's rather increasing. That means as you move away from the mean position, the probability of locating the particle increases. So depending upon this, you can straightforward generalize this. This is for n equals to 20. Now because n is even, the probability of finding the particle at the mean position will be 0 or non-zero. Non-zero. What will be the number of nodes 20, 20, and antinodes? 21, 21, 21. So you check number of nodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obviously within the classical limit. This side 10, other side 10. So number of nodes is 20 and antinode is 21. You have 10 antinodes this side and you have 10 antinodes this side and the one at the center, making it 21. And also the amplitude of probability is increasing as we move away from the mean position. Amplitude of probability is increasing as we move away from the mean position. So with the probability density corresponding to the classical oscillator, this dashed line, dotted line, as was mentioned in the last class also, that it represents the classical probability. The quantum probability is not uniform. The quantum probability is like this maxima minima, somewhere increasing, somewhere decreasing. But the dotted curve represents the classical probability. The probability of finding the particle is maximum near the extremes and it is minimum near the mean position. So we will just quickly go through the conclusions written. They are very common now. For low values of quantum number n, the quantum mechanical probability density are very different from the corresponding densities for the classical oscillator. For example, in the case of ground state n equals to 0, the quantum mechanical probability density has its maximum at x equals to 0, while classically the particle is most likely to be found at the endpoints. The second conclusion: outside the classically allowed region, the wave function curve away from the axis and decreases rapidly, but there is nevertheless a finite probability of finding the particle outside the classically permitted region. As n increases, the agreement between the classical and quantum mechanical probability density improves. This is in accordance with Bohr's correspondence principle. Yes, any doubt here, anyone? If not, then I will proceed. I hope these conclusions are okay, because we are probably discussing about these conclusions from the last class also. So shall I move? Yes. Yes, sir. One more section which is not written here for the harmonic oscillator that I will discuss.
is the zero point energy. 0 point energy. 0 point energy. Now, what I mean by 0 point energy? What is the energy eigenvalue for the harmonic oscillator? n plus half h cut omega. N plus half h cut omega, with n starting from 0. Zero. 0. 1, 2, and so on. So when n is equals to 0, you have E0 equals to is this the minimum energy of the harmonic oscillator? This minimum energy of the harmonic oscillator is known as 0 point energy. This minimum energy of the harmonic oscillator is known as 0 point energy. Now, again, there is some significance related to this 0 point energy. What is that significance? Just give me 1 minute. Yes, significance of 0 point energy. Now, think of a classical harmonic oscillator. Think of a classical harmonic oscillator. Suppose the most easiest example that we have is this spring mass system, spring with spring constant K, mass M. Now, if the object is released from the, sorry, if the object is displaced from the mean position and released, then it will execute simple harmonic motion. Yes, sir. Suppose that this system is in equilibrium at its mean position. The object is in equilibrium at its mean position, undisturbed. So, what will be the kinetic energy of the system? Zero. 0. 0. What will be the potential energy? The particle is at its mean position, not oscillating, steady at the mean position. So what is the potential energy? क्यों फंस जा रहे हैं भाई? Potential energy of a harmonic Half oscillator, kx square. x square. Half kx square. And what is x here? The particle is at its mean Zero. position, 0. undisturbed. X is 0. So potential energy 0. 0. So what is the total energy? 0. Zero. 0. So the minimum total energy which the harmonic oscillator can possess is 0 from the classical perspective. But from the quantum perspective, the minimum energy the harmonic oscillator can possess is half h cut omega. I repeat the final line only.
that the minimum energy which the particle can possess as according to classical mechanics is 0, but the minimum energy which the oscillator can possess as according to quantum mechanics is half h cut omega. Now, why is this discrepancy? Why the minimum energy computed quantum mechanically is not 0? See, I hope you must remember the expressions. इस पे कोई argument बचना नहीं है. Kinetic energy is half mv square and potential energy is half kx square. This is the total energy. Now, quantum mechanically, I am discussing now quantum mechanically. What I am saying that, suppose the particle is displaced through some distance from the mean position. Suppose it is displaced through a distance x from the mean position. Or if I say that if the particle is moving away from the mean position, is it that the potential energy is increasing? Yes, sir. Yes, sir. Means the displacement from the mean position is also increasing? Yes, sir. Yes, sir. Yes. If x increases, will it be that the uncertainty associated with x will also increase? Yes, sir. Yes, ये बहुत कॉमन बात है. आपका मेजर्ड वैल्यू जितना बड़ा होगा, अनसर्टेनिटी भी उतना बड़ा होगा. मान लो कि पूरा एक तो फॉरेस्ट का लैंड मेजर करना है, तो मेजरमेंट में जो भी डिस्क्रिपेंसी आएगा, एरर आएगा, तो जितना बड़ा मेजरमेंट होगा, एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी भी ज्यादा हो जाएगा. लेकिन मान लीजिए आपको एक तो छोटा सा थ्रेड का लेंथ मेजर करना है, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट के एनामली से कुछ एरर हो, लेकिन उतना एरर नहीं होगा जितना एक बड़ा डिस्टेंस को मेजर करने में होगा. सो मोर इज द वैल्यू ऑफ एक्स, more will be the uncertainty associated with x. Now, as according to the uncertainty principle, del x into del px is of the order of h cut, or more precisely, the minimum uncertainty product is equals to h cross by 2. If del x increases, what about del px? Decreases. Decreases. It decreases. If the uncertainty in momentum decreases, momentum also decreases. Yes, sir. And if momentum decreases, kinetic energy decreases. Yes, sir. Now, if you just have a look at the extreme values, when the potential energy is increasing, the kinetic energy is, Decreasing. or vice versa. Suppose if the potential energy would have been decreasing and kinetic energy is also decreasing, अगर ऐसा होता कि पोटेंशियल एनर्जी कम होता और काइनेटिक एनर्जी भी साथ में कम होता, तब हो सकता है कि ऐसा कुछ आता कि जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, तो टोटल एनर्जी भी जीरो हो गया. लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं. अगर पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस करके जीरो की तरफ जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ के किसी वैल्यू की तरफ जा रहा है. Both simultaneously can never be zero. If they can never be simultaneously zero, then the total energy can never be zero. Yes, sir. And if the total energy is never zero, then what is the minimum energy the oscillator can possess is half h cut omega.
I hope you have understood, but still, last question. Why, still, I'm asking the same question. Why is the classical result different from the quantum mechanical result? Because a classical harmonic oscillator is not bounded with uncertainty principle. If you are talking of a classical particle, its position and momentum both can be measured simultaneously and accurately. But in case of a microscopic particle, which is bound to follow the uncertainty principle, both potential energy and kinetic energy can never be simultaneously zero, and that is why the minimum energy can never be zero. And the minimum energy has a value half h cut omega, and that minimum energy is known as 0 point energy. अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो हमारा जो आंसर आपको दिया हुआ है उसमें ये वाला पार्ट नहीं है, तो आप जो है ना, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे बोल के आता है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 0 point एनर्जी इन अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऐसे बोल के आता है. इसको थोड़ा सा अपने से ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट उसमें लिखा हुआ नहीं है. सो यू हैव टू just think of a question that explain the meaning or explain the significance of 0 point energy of a harmonic oscillator. So there you have to explain this, that classically it is zero, but quantum mechanically not zero. Why the quantum mechanical harmonic oscillator doesn't have a non-zero value. So using uncertainty principle, you have to explain this. Okay. So we have gone through the general idea, basically the time independent solution of a harmonic oscillator. And as I mentioned that after this we have this time evolution of the wave function of a harmonic oscillator. That means if you know the wave function of a harmonic oscillator at t equals to 0, then what will be the wave function of a harmonic oscillator at t equals to t? This is what we will discuss. And I have asked you to once go through this time evolution that we discussed earlier. But still, what I will do is, because at that time, for some or other reason, uh, we just discussed it, but we didn't solve any problem. But I will solve one or two problem today, based on the time evolution. Very important questions that will help you understand the time evolution more properly, and this will be a factor that will basically act as a recalling factor for the previous theory that we have studied, and it will create a background for the next topic that we will study. So let me discuss one or two questions on that. Okay, try to recall that suppose you have a wave function at t equals to 0, which we write psi 0. How do we write this psi 0? Summation over I, Summation over Ci0 Ci0. and cat phi I. Very correct. This was the thing. And what was, how can you write psi t similar to this? Summation of Cit Correct. and cat phi I. And how is CIT related to CI0? So Cit is equals to Ci0 e to the power minus I by h cut Eit. Very good. Very good. If we can recall this much part only, then we will be in a position to solve the problems on the time evolution.
Now, if I substitute this CIT here, then the value of psi t will become summation of Ci0 e to the power minus I by h cut EIT into phi I. I have just put this CIT here. Is it okay? Yes, sir. Psi t, get psi t is, now see, is it that this Ci0 and phi I is our psi 0? Yes, sir. So can I think of something like this is e to the power minus I by h cut EIT, and then you have this psi 0, something like this. Yes, sir. Okay, इतना ही से काम होगा. Let me take one question. Suppose this is a question. This part is very important. Now, most of the time in entrance, you have a question from this. So the question probably which I am taking, maybe either a question of JAM or CSIR net of very recent years, 22, 23. A wave function, I don't have the entire question, but the meaning I recall. The wave function at t equals to 0 is given by 1 by root 2 times ket u plus ket v, and the inner product of u and v is delta ij. The energy associated with the state u is E1 and the energy associated with the state v is E2. So you are being asked that after what minimum time the wave function is orthogonal to the wave function at t equals to 0. See if you can interpret the question. आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार पढ़ के देखें. Is it okay? क्वेश्चन का क्लैरिटी है? नहीं, कोई बात नहीं. इसका क्या मीनिंग है वो खाली बता दो. इससे क्या बताना चाह रहे हैं? ये दोनों स्टेट ऑर्थोगोनल है सर. ऑर्थोनॉर्मल है. यस सर. Not only orthonormal. This is basis state, this is basis state. When the system is in this state, energy will be E1. When the system is in this state, energy will be E2. हम पहले ना आपको क्वेश्चन का एक क्लासिकल फीलिंग देते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे. एक क्लासिकल एग्जांपल देंगे. बहुत इजी एग्जांपल है जो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं. आपको इससे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना मच इजियर हो जाएगा. A very common example of projectile motion. Observe this and tell me that does this happens or not. Suppose a projectile has been fired with some initial speed, making some angle theta with the horizontal. The very common thing, nothing special. A projectile has been fired with some initial speed, suppose u, making an angle theta with the horizontal.
what was the speed? Can I say that the speed of the particle is u at t equals to 0? Yes, sir. अब आपको पूछा जा रहा है कि कितना देर बाद पार्टिकल का स्पीड इनिशियल स्पीड का ऑर्थोगोनल हो जाएगा। कितना देर के बाद पार्टिकल का जो स्पीड है या वेलोसिटी है बेसिकली, वो ओरिजिनल या इनिशियल वेलोसिटी के ऑर्थोगोनल हो जाएगा। होगा क्या, कभी होगा ऐसा? ऐसा क्वेश्चन बनाए हो कभी पहले? इसी के लिए हम एक एग्जांपल पे आए हैं, इसी बात को समझाने के लिए। वेलोसिटी ऑर्थोगोनल होगा, एक्चुअली स्पीड स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। एनी हाउ, ये है, यू डेफिनेटली नो दैट व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व, its instantaneous velocity is always along the tangent drawn to the curve. Yes, sir. So is the projectile motion a curved path? Yes, sir. Okay. Is it that after some time the particle will reach here? Yes, sir. In which direction will be the velocity? Tangential Along to the the point. tangent. But tell me one thing, is it that the velocity which the particle now possesses and the velocity which the particle initially had, are they in same direction? No, sir. No. After some time, will the particle reach here? Yes, sir. Yes. After some time, the particle will reach here and the velocity will be along this direction. Yes, sir. Is it that the angle between the initial velocity and the velocity at subsequent times are changing? इसको Yes, sir. फिक्स रखो अपने जगह पर। तो वेलोसिटी इनिशियल टाइम वाला और बाद वाला चेंज हो रहा है। मान लीजिए Yes, कभी sir. पार्टिकल यहां आया, तो क्या उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा? Yes, sir. अब मान लो इस वेलोसिटी को अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें और टी टाइम का वेलोसिटी को फॉरवर्ड प्रोड्यूस करें, ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो? पॉसिबिलिटी है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए थे, पूछ रहा है कि कितना देर के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी उसके ओरिजिनल वेलोसिटी के या इनिशियल वेलोसिटी के ऑर्थोगोनल हो जाएगा। क्वेश्चन Yes, समझा sir. कि नहीं? Yes, sir. ऑब्वियसली दोनों साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों अलग अलग टाइम का वेलोसिटी है। लेकिन ठीक है, पूछा जा रहा है कि कितना देर के बाद, तो हो सकता है 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. अब क्वेश्चन पे रिटर्न आओ। ये किसी सिस्टम का टाइम 0 का वेव फंक्शन है, दिया हुआ है। क्या टाइम के साथ ये वेव फंक्शन चेंज होगा? Yes, sir. होगा। तो पूछ रहा है कि कितना मिनिमम टाइम के बाद जो वेव फंक्शन होगा वो बिगिनिंग वाले वेव फंक्शन का ऑर्थोगोनल हो जाएगा। मीनिंग समझ आया?
Yes, sir. तो देखो मैथमेटिक्स तो बहुत इजी है. सपोज करिए दैट आई से दैट आफ्टर टाइम t the wave function becomes orthogonal to the wave function at t equals to 0. After time t, how will you write the wave function? Psi t, isn't it? Yes, sir. And if it is now orthogonal with psi 0, then this inner product must be 0. Yes, sir. बस इतना ही पे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. खाली हमको चाहिए क्या? साई 0 मालूम है, साई t निकाल देना है. एग्री? Yes, sir. सो आई एम जस्ट कंसर्न विद गेटिंग साई टी. इसीलिए क्वेश्चन बनाने बोले. क्वेश्चन बनाने से बहुत अच्छा मीनिंग समझ में आता है. देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डिस्कसिंग फॉर द टाइम इवोल्यूशन ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर. ओके, अच्छा नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिख दिए हैं. साई 0 is given, it is 1 by root 2 times some ket u plus ket v. इसको देख के ये समझ पा रहे हो कि ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1 by root 2 times u plus 1 by root 2 times v. Yes, sir. ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, summation of ci phi I. The only thing is that I runs from 1 to 2. दो ही ठो टर्म है. Yes, sir. क्लियर हुआ? तो लिखा हुआ वही चीज है. ओके, इफ दिस इज साई 0, व्हाट विल बी साई t? कैसे लाएंगे? तो साई 0 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देना है? e टू दी पावर. Minus I by h cut EIT. लेकिन समेशन में सिर्फ कितना टर्म है? दो ही है, sir. तो दो लिख ना लेते हैं, क्यों फालतू का समेशन समेशन करेंगे? तो लिख देते हैं दोनों टर्म. पहला वाला टर्म 1 बाई रूट 2 केट u मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर माइनस आई बाई एच कट ई आई में भी तो रनिंग इंडेक्स है. तो फर्स्ट वाला स्टेट का एनर्जी वैल्यू कितना बोला गया था? E1. 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 तो EI के जगह E1 इंटू टी प्लस 1 बाई रूट 2 ई टू दी पावर माइनस आई बाई एच कट E2 इंटू टी वी. देखो टाइम t का वेव फंक्शन लिख दिए. Yes, sir. अब ऐसा करते हैं, इसी का बड़ा वेक्टर निकाल लेते हैं. 1 बाई रूट 2 ई टू दी पावर माइनस के जगह प्लस E1 t ब्रा u प्लस 1 बाई रूट 2 ई टू दी पावर आई बाई एच कट E2 t bra v. Is it okay? Yes, sir. Now for the satisfaction of that question, this inner product should be equal to 0. Yes, sir. Now this inner product is 0. आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, 0 आना है. So this is like 1 by root 2 times e to the power I by h cut E1 t bra u plus 1 by root 2 times e to the power I by h cut E2 t bra v पूरा के साथ इनर प्रोडक्ट है किसका? 0 वाला. तो 1 by root 2 केट u प्लस 1 by root 2 केट v इक्वल टू 0. समझ पाए? मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस विद दिस क्या बचेगा?
1/2 e to the power e to the power I by h cut e1 t plus multiplication of this with this 0 0. Zero. Yes, this with this. 0 So the Zero. last term is 1/2 e to the power I by h cut e2 e t. to t is 0. यहां तक देखोगे तो हो गया, फिजिक्स का काम हो गया। अब हमारा काम सिर्फ इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का है। ऐसा कुछ होगा क्या? I by h cut e1t is minus of I by h cut e2t. yes sir. हम सॉल्व करने देते हैं आपको, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, नहीं तो इसको सॉल्व करवाया जाता क्लास में। e to the power I by h cut e1 minus e2 t is -1. yes sir. अब बताओ तो जरा, इसके बाद t कैसे निकालेंगे? सर लॉग ले लेंगे। log -1 का कितना आएगा? जीरो आएगा सर, माइनस को पावर में चढ़ा देंगे, log 1 ln 1 जीरो हो जाएगा। एक और ऑप्शन ये देखो, ये सब लोग एक और काम कर सकते हैं कि सर राइट हैंड साइड में हम माइनस ई टू द पावर 0 ले लेते हैं और फिर दोनों साइड का हम एक्सपोनेंशियल का टर्म्स को रिमूव कर दे और उसके बाद फिर सर पी को निकाल दे। कर सकते हैं। एनी हाउ मैथमेटिक्स आपके लिए फ्रीडम है, आप कैसे भी करिए, करेक्ट होना चाहिए वे। हम ऐसा सोच रहे हैं कि इधर e टू दी पावर i का टर्म है, मैंने ऐसा पहले किए थे इसलिए हम सेम प्रोसेस रखना चाह रहे हैं। हम इतना बड़ा टर्म नहीं लिख रहे। दिस इज cos थीटा प्लस I sin i theta sin थीटा। इसी का वैल्यू कितना आना है? -1 -1। तो थीटा कैसा वैल्यू लेगा? cos का वैल्यू -1, cos का इवन पाई +1 होता है, ऑड पाई -1 होता है, और साइन का ऑल पाई 0 होता है। मतलब थीटा को अगर हम 2n+1 इंटू पाई ले लें तो क्या इस थीटा को सब्स्टिट्यूट करने से -1 आएगा? देखो तो यस आ सर। जाएगा ना। ऑड पाई में सब cos -1 आते जाएगा और सारा साइन 0 होते जाएगा। yes sir. यस सर। एग्री। तो वही थीटा जिसको लिख रहे हैं वो थीटा का वैल्यू है कितना? थीटा का वैल्यू है I by h कट, माने e टू दी पावर i थीटा ई वाला ना है। yes sir. I को Yes, sir. यस सर, आयोटा नहीं होगा सर। आयोटा नहीं होगा, करेक्ट। दिस इज e1 minus e2 into t is 2n plus 1 into pi into h cut. So you have 2 as 2n plus 1 into pi into h cut divided by e1 minus e2 with n starting from 0, 1, 2 and so on. यहां से n पता चलेगा आपको। n का वैल्यू 0 लेंगे तो cos pi -1, n का वैल्यू 1 लेंगे तो cos 3 pi -1, ऐसे आ रहा है। अब हमको पूछा था कि आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम द वेव फंक्शन बिकम्स ऑर्थोगोनल। तो t मिनिमम होने के लिए n कितना? Zero. 0. So the minimum time after which the wave function becomes orthogonal to the wave function at t equals to 0 is pi times h cut by e1 minus e2. ठीक है ना? समझ आया? तो yes yes देखो ये सब क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना तो वेव
टाइम इवोल्यूशन पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। फिर ये सब बनाने से आपको इंटरेस्ट जगेगा कि अच्छा ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इसीलिए हमने आपको एक क्लासिकल एग्जाम्पल भी दे दिया। बहुत रेयर है ये क्वेश्चन, आपको बहुत कम जगह मिलेगा, ठीक है, बहुत कम जगह पर ये क्वेश्चन मिलेगा। एज फार आई रिकॉल, you will get this question only in IE Rodo. प्रोजेक्टाइल मोशन में ये क्वेश्चन आपको इरोडो में मिलेगा और कहीं पर ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए शानदार है, मैंने इमेजिन करा दिया कि क्या बोलना चाह रहा था। फाइन। Yes, sir. We have very similar questions to what I discussed right now. एक और देते हैं, एक और हमने खोजा है क्वेश्चन। This was which I recalled, but let me take one more question. Yes, the question says that at t equals to 0, the wave function of a free particle confined between infinite walls x equals to 0 and x equals to L. A particle is confined between these two boundaries, and the wave function at t equals to 0 is given by, it is under root 2 by L sine of pi x by L minus of sine of 3 pi x by L. पूछ रहा है कि इट्स वेव फंक्शन एट ए लैटर टाइम t इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 4 पाई h कट कितना होगा? This is the question. You have been given the wave function at t equals to 0 and you have been given the time. इस बार टाइम दे दिया है कि इतना टाइम के बाद इसी पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. Is it our known problem? क्या ये हम लोगों का नोन प्रॉब्लम है? पार्टिकल इन अ बॉक्स? Yes, sir. So this is our known problem of particle in a box. The dimension of the box is L. Okay, tell me what is the wave function for particle in a box? Under root Under root 2 2 by by L. L sine n by x by L. True. Sine n pi x by L. Energy eigenvalue? n square h cut square upon 8 If it is ml 8, square. then it is h square, not h cut. N square h square by 8 ma square. If you Yes, sir. convert this in h cut, the denominator value will change. With n starting from 1. 1, not 0. So what is the value of psi 1? Under हम root just one रट के पूछ Under root 2 by L sine pi x by L. Correct. Now return back to the question. This is the wave function at t equals to 0. This is the wave function at t equals to 0. Psi x and the time is 0. Okay, the wave function at t equals to 0. Wave function में ही लिखा है, kit में नहीं लिखा है. Under root 2 by L, is it like this is psi 1 minus psi 3?
यस सर। Yes, sir. और सर फिर तो सर √2/l को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, √2/l हटा देते हैं तब यस सर। ट्रू, that is incorporated in psi1 already. So this is psi1 minus psi3. तो हमको वेव फंक्शन पूछा जा रहा है एट टाइम t, टाइम t का हमको वेव फंक्शन पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं। तो हम लोग टाइम t का वेव फंक्शन सोचते हैं उसी तरह से, तो डायरेक्ट ही लिखेंगे द वेव फंक्शन एट टाइम t इज, ऐसे ही लिखते हैं जो लिखा हुआ है, इट इज √2/l साइन ऑफ पाई x बाई एल। ये समझ पा रहे हो ना, ये phi1 हो गया, phi1 इतना पूरा चीज इंटू e⁻ माइनस I/8 कट E1t आएगा साथ में। Yes, sir. यस सर। यस, तो उसको डायरेक्ट लिख दिए और इस फैक्टर को यहां पर इंक्लूड कर दे रहे हैं। साथ में कौन आएगा, तो e⁻ माइनस ऑफ I/h कट E1 इंटू टी। एग्री? एक और टर्म है अभी लिखेंगे, माइनस √2/l e⁻ माइनस I/h कट, बोलो E3 into T. 3t हाँ E3, E2 नहीं लिख देना, ये E3 वाला टर्म है। सो साइन ऑफ 3πx/l। तो आ गया मेरे पास वेव फंक्शन, लेकिन हम इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि t दिया हुआ है, तो t को पुट करेंगे, यहाँ t को भी पुट करेंगे और E1 को भी पुट करेंगे। सो इट इज लाइक √2/l e⁻ minus I/h cut. What is the value of E1? h square by, 8m square. 8 अच्छा इसको h कट में बदल लो तो n स्क्वायर, h कट स्क्वायर बाई, h cut is your h by 2 pi. So ma h cut square. square is your h square by 4 pi square. कितना होगा? सर n स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। पाई स्क्वायर एक आएगा ना ऊपर, हाँ सर। n square pi square h cut square by 2ma square. Is it okay? ठीक लिखा है ना? Yes, sir. पुट किया जाए E1 का वैल्यू, n तो नहीं, n1 हो गया, h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, और टाइम का वैल्यू कितना दिए हैं, टाइम m इंटू एल स्क्वायर, m इंटू एल स्क्वायर बाई 4 पाई h कट माइनस 2/l। अच्छा, साइन वाला फैक्टर एक होगा, साइन ऑफ पाई x बाई एल e⁻ माइनस I/h कट E3 का वैल्यू, इज इट 9? यस सर। Yes, sir. 9. 9 pi square h cut square by 2m l square, and the time is m into l square by 4 pi h cut into, you have this sine of 3 pi x divided by l. देखो कुछ कैंसल वंसल हो रहा है कि नहीं, m कैंसल होगा, l स्क्वायर होगा, एक पाई कैंसल होगा, एक h कट कैंसल होगा, h कट पूरा ही कट जाएगा, कुछ नहीं सोच रहा तुम लोग साथ में। √2/l, बोलिए कितना बचेगा, e⁻,
minus I. Pi h cut by 2 and 8. Pi h cut by 8. सेकेंड वाला, फिर यहाँ पर सेम ही हिसाब है, एम कटेगा, एल स्क्वायर पूरा कटेगा, पाई का एक टर्म कटेगा, पाई का एक टर्म कटेगा, एच कट स्क्वायर पूरा कट जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा इस बार? ई टू दी पावर माइनस आई पाई 9/8। Yes, sir. सॉल्व हो गया है, कुछ कॉमन उमन आ रहा है तो लेंगे। रूट अंडर 2/L इज कॉमन, ई टू दी पावर माइनस आई पाई बाई 8 कॉमन, कितना बचेगा? Sin साइन पाई एक्स बाई एल ई टू दी पावर 9 बच जाएगा। e to the power minus I pi by 8 into e to the power 9, ये दोनों मिला के इतना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। no, sir. हम लोग को ये मैनिपुलेट कर लेना है कि क्या आएगा। कर लोगे ना, हम छोड़ दें, सब कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। हमने आपको लॉजिक समझाया, ये है लॉजिक। यू माइट गेट सम क्वेश्चंस इन दैट जेटली बुक आल्सो, इस पर एक दो तो क्वेश्चन बना लेना ठीक रहेगा। इस दोनों को तो पहले बना लेना और उसके बाद इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा याद जैसा हो गया ना कैसे हम लोग साइड टी लिख रहे हैं। बेसिकली आफ्टर दिस वी विल बी, यू हैव अ क्लास एट 10 o'clock? Yes, sir. Okay, no problem. Then I will end it now. We will have a class tomorrow again. And tomorrow we will complete that time evolution of the wave function of a harmonic oscillator. Okay. You just practice these two. I will send this today's class PDF directly for the last two problems. And the theory part, you already have that. Okay, fine. Thank you, sir. Just 1 minute.